हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं और उनको जानना इतना ज़रूरी क्यों है। और मैंने बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लाइक ऑलमोस्ट 100 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को मैंने जस्ट लिस्ट आउट किया था। एंड कुछ ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स है जो मुझे लगा कि साथ में एक्सप्लेन भी कर देते, तो मैंने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी किया था। लाइक जैसे मार्केट वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, कौन कौन सी लाइक अकाउंटिंग हम देखते हैं। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, एंड इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मुझे लगा कि एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, तो मैंने वो एक्चुअली एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत, नॉट इन डिटेल बट आई हैव done it in a quick way. So आज की वीडियो में we are going to discuss all these 100 basic accounting terms that a business owner or the stakeholder or the investor into the business must know one by one. Right? So we will start with the first basic accounting terms, that is called the assets. That is called the assets. And so assets क्या होती है basically, it is an economic resource. It is an economic resources that are owned or controlled by a business. So कौन कौन सी ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे जो बिजनेस ओन करेगी या उसको कंट्रोल करेगी। सो लाइक बिजनेस में बहुत सारी ऐसी एसेट्स होंगी जो बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे लैंड हो गया, या खुद की लैंड हो सकती है, या फिर हम लैंड उसको रेंट पे ले सकते हैं या लीज पे ले सकते हैं। जैसा बिजनेस होगा उसी हिसाब से वी विल इन्वेस्ट द मनी इनटू दैट पर्टिकुलर एसेट्स। सो लैंड इज वन टाइप ऑफ एसेट्स। दूसरी हो गया लाइक अगर हमारा ऑफिस है तो उसमें फर्नीचर होगा, फर्नीचर कैन बी ऑल्सो एन एसेट्स, राइट। सो फर्नीचर हो गया, लाइक एसी हो गया, AC हो गया, and then like chairs. In furniture also chairs will be included, and there are others like laptops and all, laptops, computer हो गया, desktop हो गया। So ये हो गए, and other assets हो सकती हैं जैसे लाइक कैश हो गया, जो बिजनेस में जो भी हम आइटम्स बेचेंगे, जो भी कैश आएगा तो वो भी हमारी एसेट्स होगी। सो बेसिकली एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस. So that is all about the assets. So there are various types of assets in the business. Some are tangible assets, some are intangible assets. Intangible assets वो assets होती हैं intangible, आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच, कैन नॉट टच, कैन नॉट टच। we can just see the figure into the balance sheet, like goodwill हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ये सारी ऐसी एसेट्स होती है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द नाइकी, नाइकी is a brand. If I talk about the Puma, Puma is a brand. So basically this kind of branding, this kind of image of that company is called as the intangible assets that helps the company to earn more and more profit, right? So and another assets will be tangible assets. Tangible assets वो ऐसी assets होती है that we can touch, we can touch, we can touch or we can see, लाइक लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, कैश हो गया। सो दीज आर द एसेट दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील इट। सो ऑल दीज आर called as the tangible assets. So in that also there are various other categories into, like some are current assets, some are fixed assets, so that we are not going to discuss in detail because this video is all about the basic accounting term that we should know, like what is asset, that we know, like intangible assets होती है, tangible assets होती है। Like if someone will ask give me any example of assets, you can say land is an example of asset, furniture is an example of asset, AC that is being used in the company is an
example of assets. So these are the few example of assets. Let me just rub it, and then quickly we will move to the next basic accounting terms. Yes, okay. So the next second, yes. So the next basic accounting terms is the liabilities. So liabilities क्या होती है? Liabilities, it is, it can be the debts or the obligation owed by a business to a third party. सो बेसिकली जैसे मैंने मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट वॉट हैपेंड एक्चुअली, आई वॉन्टेड टू, आई हैड अ वेरी ग्रेट आइडियाज बट आई डिड हैड द मनी दैट टाइम. So what I did, I took the loan from the bank, or I took the loan from one of my friend, and he has given me 5 lakh rupees. So that will be the liability over me, like not over me basically, because we have already discussed the business entity concept, where the business owner will be a different entity and business entity will be a separate entity. So basically it will be the liability of the business to pay that amount back, so that will be treated as a liability. Like if I have bought the furniture on credit basis, that will be a liability. If I have purchased anything on credit, that will be a liability for the company. If I have issued the share into the market and shareholder has purchased all these shares and they have paid the money to the company, that will also be treated as a liability, because some or the other way we are going to give that money back to the shareholder. So that's nothing but the debt of the company or obligation that is owed by a business to a third party will be called as the liability. Then the another basic accounting term is the revenue. Revenue क्या होता है? Income generated by a business from its operation. So like अगर कोई business कर रहा है, तो जो भी इनकम इनकम जनरेट होगी साल में, सो वो उसकी रिवेन्यू कहलाएगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेट इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द gross profit, I'm just talking about the revenue. Whatever income that will be generated out of a business from the operation, it will be called as the revenue. जैसे मैंने 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया, सो दैट विल बी द रिवेन्यू ऑफ दैट कंपनी. सो अब 20 लाख में कितना प्रॉफिट है, दैट इज अप टू द कंपनी, लाइक कितना प्रॉफिट रख के वो सामान बेच रहे हैं. ठीक है. So 20 lakhs will be the revenue of that company. Income generated by a business from its operation, that's called the revenue. Then another example, another basic accounting term, that is the expenses. Expenses क्या होता है? Cost incurred by a business to operate. लाइक अगर मैंने 20 lakhs का, फॉर एग्जाम्पल 20 lakhs की रिवेन्यू मेरी हुई है, यहाँ पे देखो 20 lakhs रुपीज की रिवेन्यू हुई है इन अ पर्टिकुलर ईयर, लाइक इन 2022 मान लेते हैं कि मेरी 22 में 2022 में मेरी टोटल रिवेन्यू कितनी थी? 20 lakhs. तो 20 lakhs को 20 lakhs की रिवेन्यू अर्न करने में मुझे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं डेट आई हैव टू बियर, लाइक मुझे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, लाइक जो भी रेंट होगा बिल्डिंग का वो देना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होगा, जो भी फिन फ़ोन बिल होंगे, जो भी स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ के expenses होंगे, all these expenses will be deducted when we will calculate all these, gross profit, not basically gross profit, when we will calculate the net profit. So expenses are nothing but which are incurred by a business to operate the business. So जो भी business को हम चलाने के लिए जो भी expenses करते हैं, उनको बोलते हैं expenses. And then another basic accounting term is the account payable. Account payable क्या होता है? The amount a business owes to its supplier or the vendor. So account payable क्या होता है कि अगर अगर बिजनेस में कोई भी हम ऐसी एसेट्स खरीदते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, सो जो भी हमारी क्रेडिट की गई परचेज है,
तो जो भी हमारा अमाउंट उस थर्ड पार्टी को देना है दैट विल बी अकाउंट पेबल। फॉर एग्जांपल मैंने एक फर्नीचर खरीदा जिसकी वैल्यू थी, फर्नीचर, वन सेकेंड, फर्नीचर मैंने खरीदा बिजनेस में जिसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपीज़। तो अच्छा खासा फर्नीचर था, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। 5 लाख रुपया उसको मैंने क्रेडिट पे किया था। क्रेडिट पे किया था मतलब उस टाइम क्या हुआ, मेरे पास कैश था ओनली 1 लाख रुपीज़। तो कैश मैंने 1 लाख रुपया दे दिया, बाकी 4 लाख क्रेडिट पे ले लिया। ठीक है, तो 4 लाख मेरा क्या होगा, अकाउंट पेबल होगा, बिकॉज आई हैव टू पे दैट 4 lakhs टू अ पर्सन फ्रॉम whom I have bought the furniture. So that will be nothing but the account payable. Okay, I hope this is clear. So whatever company is liable to pay to a third party, that is called nothing but the account payable. And then after that we have the another, one second, let me just remove this. Then we will move to the next. Okay, erase all of this. Yeah, next you can see here another accounting terms, that is nothing but the account receivable. Account receivable क्या होता है? Account receivable, the amount a business is owed by its customer or the client. For example मेरा बिजनेस है एसी का, एसी का मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने एसी बेची 2,50,000 रुपये का, 2,50,000 रुपये की मैंने 5 एसी बेचा एक कस्टमर को, टू अ कस्टमर। ठीक है, अब उस कस्टमर के पास क्या था कि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। लाइक उसने मुझे बोला कि मैं अभी 2 लाख रुपया दे देता हूँ, कैश मेरे पास है 50,000 रुपया जो भी बचा हुआ है, आई विल पे यू बैक आफ्टर 1 मंथ और मे बी आफ्टर 2 मंथ। तो जो भी 50,000 रुपया मुझे आई हैव टू गेट इट फ्रॉम दैट कस्टमर, दैट विल बी माई अकाउंट रिसीवेबल। लाइक आई एम supposed to get it back, like maybe after 1 month or maybe whatever has been decided between me and the customer. So that will be my account receivable. Okay, the amount a business is owed by its customer or the client is called as the account receivable. Okay, I hope this is also clear. Let's go to the next topic. The next one is the कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ अ बिजनेस। जो भी बिजनेस में कैश आता है, जो भी बिजनेस में कैश बाहर जाता है, ऑल दिस फ्लो इज कॉल्ड एज द कैश फ्लो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड में 2021 टू 2022 में मेरे बिजनेस में कैश आया ऑलमोस्ट समवेयर 20 lakhs का कैश आया। ठीक है, और 2021 एंड 2022 में मेरे बिजनेस से कैश गया, आउट हुआ समवेयर 15 lakhs। सो दिस इज नथिंग बट द कैश फ्लो इन द बिजनेस, कि कैश कितना आ रहा है, कैश बिजनेस से कितना बाहर जा रहा है, दैट्स कॉल्ड द कैश फ्लो। द मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एज द कैश फ्लो फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ओके, then move to the next topic. Next one, yes. Next one is the balance sheet. Balance is nothing but it is a financial statement that reports a company's assets, liability and equity at a given point in time. Basically balance sheet क्या होती है? Balance sheet बनाई जाती है एक particular date पे। It can be 31st of March. Some businesses follow like 31st of December को balance sheet बनाते हैं। तो basically balance sheets are prepared on a particular date. So वो सारी चीज़ें बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई जाती है? जो भी एसेट्स है बिजनेस की, जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी इक्विटीज़ है, जो भी कैपिटल है, जो भी क्रेडिटर है, जो भी डेप्टर है, जो भी डेप्रिसिएशन लगा है, वॉट एवर इज नेसेसरी, वॉट एवर द कंपनी इज डीलिंग विथ, all these things will be shown into the balance sheet. So basically balance sheet क्या है? Balance sheet is a
financial statement that is very helpful for the owner of the company, for the stakeholder of the company, for the investor of the company, and even different user of accounting information. On this balance sheet, on the basis of balance sheet only, they will be able to take the right decision. Either they should invest into the business or they should not invest. On the basis of balance sheet, a lot of decision regarding the future investment can be taken. So balance sheet is nothing but a financial statement which is prepared on a particular date. It can be 31st December, or it can be 31st March. Okay, and let's go to the next topic. Next, accounting terms. Income statement क्या होता है? A financial statement that reports a company's revenues, expenses, and net income or loss over a given period. Income statement वही होता है, like profit and loss account when we prepare. So in that we can find out the income statement. That is, profit and loss account is nothing but the income statement, जिसमें हमें नेट इनकम का पता चलता है और नेट लॉस का पता चलता है कि हमने बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, कौन कौन से हमारी इनकम हुई है. सो आफ्टर डिडक्टिंग from the revenues, after deducting income from the revenues, we will get the net income, or it can be the net loss. If the income is more than the expenses, then it will be the net income, and if the expenses are more than the income, then it will be net loss over a period of time. Okay, income statement. And then the next one we have is the net income. Net income क्या होता है? Net income we find out when we prepare the profit and loss account, the difference between a company's revenue and the expenses. So for example, अगर किसी company की revenue है in a particular year, like for example in 2021, if the revenue of a company is like 5 lakhs, and total expenses that the company has incurred in 2021 is 3,50,000. That is the total expenses that the company has incurred in 2021. So what will be the net income? The net income will be the difference between revenues in 2021 and expenses in 2021. So 5 lakhs minus 3,50,000, 1,50,000 balance will be the net income for that company. If the amount is just opposite, like expenses is 5 lakhs and the revenue is 3,50,000, then it will be the net loss, right? I hope this is clear. Then we have the debit. Debit क्या होता है? An entry in account that increases assets or decreases liabilities and equity. So कोई भी ऐसी एंट्री जो एसेट बिजनेस में इंक्रीज करती है वो डेबिट होती है. लाइक अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उस टाइम भी वो भी एंट्री डेबिट होती है. Like when we will do the proper journal entry, that time you will understand this particular, what is the role of debit and what is the role of credit. So उस टाइम पे you can easily understand कि जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट क्यों करते हैं, और जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट क्यों करते हैं, या इक्विटी डिक्रीज होती है तो डेबिट क्यों करते हैं. So basically debit is nothing but it is an entry in account that increases assets or decreases liability and equity. Okay, and then the next second one is we have is the credit, an entry in an account that decreases assets or increases liability and equity. It is just opposite of debit. Like when the asset will decrease into the business, that time the assets will be credited, like we will make a credit entry, and like when the liability will increase, that time it will be credited again. So that is nothing but the debit and credit. We will understand in a better way when we will do the proper journal entry, because I can make you understand right now, but I have to make a chart, then I have to draw what is the formula of personal account, nominal account, real account, what happens when
we purchase the asset, what happened we when we pay the liability, what happened when the liability decrease. So it will take a time and I may not be able to explain it in 10 minutes. So that's the reason we will do the proper general entry that time. Debit and credit we will understand in a better way, because debit and credit is very important. Without knowing the debit and credit, we may not be able to actually do the general entry. Of course we need to know the uh, uh, rule of accounting, like what is the formula of personal account, was it is the formula of real account and nominal account, we need to know it. But there is a great role of debit and credit, like dual entity, dual aspect concept, like every transaction has two aspect, one is debit, one is credit. So that's the reason we should just know as of now, like what is debit and what is credit. But the role of debit and credit is very much into the whole accounting system is actually based on this debit and credit. Okay. Uh, so in this video we will stop it here, and thank you so much for watching. If you have any doubt about all these basic accounting terms, so far we have discussed around some 12 basic accounting terms that, like, you might have understood. If you have still not understood, please put the comment in the comment section and I will get back to you. And I will highly appreciate if you will give your फीडबैक, बिकॉज फीडबैक से क्या होता है, लाइक मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि मैं सही में अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लाइक क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे मुझे वर्क ऑन करना पड़ेगा। मे बी समटाइम क्या होता है, मैं आई माइट बी स्पीकिंग इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, सो किसी किसी को डिफिकल्टीज होती होगी समझने में। सो अगर इंग्लिश ज़्यादा हो रहा है तो डैट यू कैन ऑल्सो मेंशन इन दी कमेंट, सर इंग्लिश में ना हिंदी में भी आप एक्सप्लेन करो तो थोड़ा इजी होगा समझने में, बिकॉज I may be comfortable more like into English, because Hindi, it's been quite a lot of time like I didn't speak Hindi, so इसलिए मेरा fluency अभी उसमें नहीं है। I can speak Hindi properly but थोड़ा वो निकल गया, लाइक आई हैव बीन इन साउथ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 8 years, सो आदत खत्म सी हो गई है। सो दैट्स द रीजन, अदरवाइज आई एम comfortable. I will try to explain both in English and Hindi in the coming videos. If you are finding any difficulties, just put it in the comment box. And thank you so much. If you like the videos, please subscribe, because if you will subscribe, I will be really motivated to work as much as I can, and I will be more happy to make new videos for you, because uh, if you will subscribe, of course I will be motivated. And what we expect, like if I'm working hard to make videos, to record it, to upload it, even I actually need something out of it, right? Of course I'm giving the knowledge to the student, that's like a kind of social service. But if you will subscribe, more people will be actually be able to watch it, because sometimes search engine optimization play a very great role. Like if you will like my videos, other people, automatically it will be shared by YouTube to other people who are watching such kind of accounting videos, so they can also watch and they can also be benefited. So thank you so much once again. If there is any problem, if there is any difficulty in understanding, please let me know in the comment section, and I'm always approachable to you. Thank you so much. We will see you. I'll see you in the next video. I'll come with the another basic accounting terms, like we have almost 100. So one by one we will cover everything in detail. Once again, thank you so much. Please subscribe this channel.